Scenes from across several Indian cities are raising serious concerns about a growing LPG crisis. Consumers are lining up outside gas agencies, many of them waiting for hours, hoping to secure a refill for their cooking cylinders. What is adding to the confusion is the gap between the government's claim that India has LPG reserves for nearly 70 days and the reality playing out on the ground, where consumers say supplies are becoming increasingly uncertain. The chaos across the country is unfathomable. A ground report from Lucknow shows that the scale of the problem consumers are facing. Our colleague Abhijit Thakur found more than 150 people standing in line outside a gas agency, each hoping to receive a cylinder refill. But by the time distribution ended, only 56 cylinders were available. Nearly 100 people who had waited patiently in the queue were forced to return home without getting a cylinder. हाँ, किल्लत बहुत है। सब 2-2 बजे से लोग लाइन लगाए। पहले एक दिन में कितने सिलेंडर आते थे, संख्या क्या होती थी? एक दिन में 400 की सप्लाई आसपास हो जाती थी। हैं, तो जैसे पहले माल गोदाम में भी भरा रहता था, अब गोदाम में भी एक सिलेंडर नहीं बचा। अब ये कस्टमर आते हैं तो क्या करें? लेकिन लोगों के बीच का डर तो स्वाभाविक है, क्योंकि सप्लाई तो आपके पास कम आ रही है। आप जी जी वो तो है जी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों ने गोदाम में रोक लिया है गैस क्योंकि उनको पता है कि आगे नहीं मिलेगा, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं, हम ताला खोल के दिखा सकते हैं। आप एक बार दिखा सकते हैं अगर, तो हमें दिखा दीजिए। देखिए, लोग आरोप लगाते हैं कि एजेंसी वाले, गोदाम वाले सिलेंडर को अपने यहाँ रोक ले रहे हैं, भरे हुए सिलेंडर मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यहाँ पर ईमानदारी से ये अपने पूरे गोदाम को खोलकर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इधर उधर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर यहाँ पर खाली वाले पड़े हुए हैं और इनको रिफिल नहीं मिला है। ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कमर्शियल सिलेंडर के सप्लाई की बात जो कही जा रही है रोकी गई है, वो सच में रुकी हुई है और यहाँ पर खाली सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ भी आप तस्वीरें ये दिखाइए, ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर हैं, ये डोमेस्टिक है, इसके आगे कमर्शियल, वहाँ कमर्शियल, और ये भी छोटे कमर्शियल सिलेंडर ही हैं जो कि यहाँ रखे हुए हैं। ये सब खाली सिलेंडर हैं, यानी खाली सिलेंडर हैं, इनको रिन्यू नहीं किया गया है, रिफिल नहीं मिला है, जिसके कारण ये खाली पड़े हुए हैं। अब हम आते हैं गोदाम के भीतर। जैसा कि कहा जाता है कि रोक लिया है गोदाम वालों ने या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसकी रियल तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा गोदाम है और जितने सिलेंडर हम देख रहे हैं सारे खाली सिलेंडर हैं। खाली हम देख रहे हैं कि किसी पे भी देखिए कैप नहीं लगा है, किसी के ऊपर भी पैकिंग नहीं है, मतलब कि ये तमाम कमर्शियल सिलेंडर हैं जो कि खाली हालत में पड़े हुए हैं। The situation in Noida appears just as worrying. Our reporter Puneet Sharma found residents standing outside a gas agency from as early as 4 in the morning in the hope of securing a cylinder before supplies run out. ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लग रहा है। मैं नोएडा के सेक्टर 5 के हरौला इलाके में हूं और यहां पर लंबी लाइन है, लगभग 300 से 400 मीटर, 500 मीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है, जो सुबह से यहां पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग अपने बच्चों तक को लेकर के यहां लाइन में खड़े हैं। और ये लाइन है इस वक्त LPG सिलेंडर्स की। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पूरे दावे कर रही है कि जो घरेलू गैस की सप्लाई है वो ठीक तरीके से हो, लोगों को बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाए। लेकिन ये जो पैनिक सिचुएशन चल रही है वो इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बड़ा जो भीड़ है, आप देखेंगे कई सौ लोग इस वक्त सेक्टर 5 में नोएडा में इस वक्त गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर के मौजूद हैं, कोशिश में कि उनको सिलेंडर मिल सके। दरअसल जो सिचुएशन आ रही है, कुवैत सबसे ज़्यादा 40% गैस की सप्लाई भारत को करता था, वहां उसने पूरी तरीके से जो सप्लाई है भारत को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो शिप्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत में इस वक्त जो LPG की है वो सप्लाई में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सरकार कई कदम उठा रही है, लगातार मीटिंग्स कर रही है और उनका यही कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर सबसे पहले लोगों को मिलना चाहिए, पैनिक बुकिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पैनिक सिचुएशन किस तरीके से लोगों के बीच में फैली हुई है और सिलेंडर लेकर के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिलेंडर लेने कितने दिन से आ रही हैं आप? सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। 4 दिन से? 4 दिन से सिलेंडर ही नहीं मिला? मेरे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे आधे मिलते हैं, आधे वापस चले जाते हैं। रोने की स्थिति, आप तो रोने लगी। क्या करें, मजबूरी है। 2 बजे से हम लोग आगे खड़े हैं। कितने बजे से खड़ी है यहाँ? 4 बजे। 4 बजे से खड़ी है। देखिए, आलम ये हो चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं।
इनका कहना है कि 4 दिन से सिलेंडर नहीं है, खाना बनाने की दिक्कत आ रही है। स्थिति लोगों की आंखों में अब इस युद्ध की वजह से भारत में आंसू तक आ रहे हैं। Before I tell you what's driving the LPG crisis anxiety, here's another ground report from Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ पकवान लकड़ी पे भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पे भी कर रहे हैं और गैस पे भी कर रहे हैं, उसी तरह हम मैनेज कर लेते जा रहे हैं। लेकिन हमको ये बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये रमज़ान के आखिरी अयाम में बहुत सारा कस्टमर रहता, क्योंकि इफ्तार पार्टी चलते, घरों में इफ्तार पार्टी होती है, मस्जिदों में, और हिंदू भाइयों के पास भी लोग गिफ्टां भिजाते हैं। उसी तरह बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है। हम कोशिश तो कर रही है और सारे होटल्स वाले बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान है कि गैस हमें नहीं मिल रहा बोल रहे हैं, और गैस सप्लायर्स भी वही बोल रहे हैं हम क्या करना भाई बोल के। Another factor adding to the anxiety is the change in refill timeline for certain categories of LPG consumers. The refill gap for rural or the Durgam, Kshetriya, Vitrak and Gramin Vitrak connection has now been extended to 45 days compared to roughly 25 days earlier. Urban consumers, however, continue to have a refill cycle of about 25 days. India is one of the world's largest LPG markets, with demand crossing 28 million tons every year. More than 31 crore connections are active across the country, and a significant share of this demand is met through imports. Rural households typically use about 5 cylinders a year on average, which means even small supply disruptions can quickly affect millions of families. All of this is happening even as the government maintains that India currently has enough LPG reserve for nearly 70 days. If that claims holds true, the shortages and long queues seen across cities raise an important question about whether the issue lies not in availability but in distribution. LPG war also reached Parliament, where Leader of Opposition Rahul Gandhi crossed swords with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri. A very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. India's crude supply position is secure, and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. So the question is whether India is prepared for the scenario where war does not end quickly. I am joined by Professor Bijon Misra, consumer policy expert. So thank you so much for joining you. Let me take an opening comment before I dip into a break, sir. You have seen the crisis which I reported from various cities, authentic reports. What is spurring this LPG issue? Where is the bottleneck, sir? Just put it bluntly. Yeah, the bottleneck is inefficient working of the state government. You see, the state governments, instead of trying to manage in terms of ensuring that consumers don't leave their homes and comes and stands in the queue for days together, which you are reporting on the ground, the state government should feel ashamed that how they are allowing such citizens to come out of the house, and why not they sit in the godowns and in the retail outlets in the supply chain and ensure that they are reached at home, and they are reached efficiently and effectively at home, even if it means additional labor involved to reach these cylinders in a manner where bulk supplies can be made of the cylinders over a truck or in bulk form in mohallas, where citizens can come near their house and take it or reach it to their home. I feel that all these cylinders could be reached at home rather than making citizens get panicked and come and stand there for 4 days. You showed on your visual
a woman was literally crying. I mean, this is shameful. This is shameful. I mean, this goes to show how inefficient the state governments are, because there are dedicated departments within the state government which looks into these kind of affairs, which talks about food, civil supplies, and consumer affairs. They are the ones who should be today. What are those inspectors doing? I mean, where are those people who have been paid fat salaries, remunerations, amenities to look after the citizens? Where are they? They should be standing in queues in this go down. I mean, this is shameful. Absolutely. This is just shameful. Absolutely. Why should people be made to come out of their house